Yes. Further to what we were doing, the next are articles. So articles. We were actually doing determiners yesterday. So we are furthering it. So next is articles. So articles होते क्या हैं otherwise? Articles help us in determining the or modifying the noun. So whom are we call the articles? We say, if we say the, a, an, they are used before the nouns. So articles होते हैं the, a, an. These are all used before the nouns, right? So if I say this is a cow, he ate an orange. Who is the man standing at the door? Right? So these are articles. We'll do the articles in detail separately, right? So for the purposes of determiners, these are the articles, right? We'll do the articles separately otherwise. So then it will be more clear. So after the articles, next are numerical determiners. Numerical determiners कौन होते हैं? जब when a few, the few, many, any, some, all, two, three, both, etc. are followed with countable nouns. उनको हम क्या बोलते हैं? Determiners. For example, many domestic animals died during the famine. So I am kind of counting the numbers in the shape of numbers, right? All the teachers were honored by the president. So all the teachers were honored by the president, right? Next, if I say both the boys were admired by all, सभी लड़कों को, दोनों लड़कों को हम admire करते हैं. If I use the word one, I say two, I say three, ठीक है? And so on. So what do I call them? I call them cardinal numbers. So these are known as cardinal numbers. अब cardinal numbers कौन होते हैं? Cardinal numbers which are expressed in mathematical numerical quantities. इनको हम cardinal numbers बोलते हैं. For example, there are 10 boys in the class. So ये cardinal number है, right? I can also say Rahul got the first prize in singing competition. So what is all this? This is again a cardinal number. So anything which is expressed in 1, 2, 3 are called as cardinal numbers. So 1, 2, 3 के बाद dots लगे हैं. It means जहां जहां number आते जाएंगे. If you say 1223, so it's again a cardinal number. So anything which is expressed in this shape is known as a cardinal number. So this was the fourth
article. Numerical numbers were the fifth type of determiners. Then comes the sixth type. So what is it? Distributive determiners. Distributive. When either, so we remember either or neither. So when either, neither, etc. are followed by countable nouns. So जब ये सारे words जो हैं वो countable noun से follow करते हैं, what do we call them? We call them distributive determiners. So for example, if I write neither boy, T-H-E-R. So neither boy was allowed to attend the class. Neither boy was allowed to attend the class. Okay? So this is distributive. I have distributed it. I can also say there are rows of trees on either side of the road. So दोनों साइड. So मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना. कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? By using either or neither, neither, right? So I've distributed it with these words. So these are all known as distributive determiners. Next is WH. क्या होता है ये? Words are used as determiners when they are allowed or followed by nouns. जब ये follow करते हैं nouns को, कैसे? How do we ask them? How do we say to it? We say whose father is a doctor, right? So whose father is a doctor? I can say which. So these are all starting with WH. Which book? So आपने noun को classify कर दिया ना? कौन सी book? Which book do you like the most? कौन सी book आपको सबसे ज्यादा पसंद है? ठीक है? So आपने इनको classify कर दिया. There are few determiners जिनका correct use is the correct. We have to understand the correct use of determiners. हमें इनका correct use understand करना बहुत जरूरी है. So इनका correct use क्या होता है? कैसे हम इनको understand करते हैं? For example, some, any. अब ये determiners हैं हमारे. How do we use them correctly? कैसे use करेंगे हम correctly इनको? So first, yeah, some is most often used as a determiner in affirmative sentences. So am I clear? Some is most often used as in affirmative sentences. Yes वाले, हाँ वाले sentences में. It is either followed by a countable noun, और या तो ये countable noun को follow करेगा और
giving the sense of थोड़ा, a few. So जब ये काउंटेबल नाउन्स को फॉलो करेगा तब ये क्या सेंस देगा? a few. जब भी हम सम को यूज करेंगे सो वो हमेशा थोड़े की सेंस देगा, that you are talking of थोड़े नंबर, a few. और by an uncountable noun, by an uncountable noun giving the sense of किस चीज की? a little. So a few और a little. जब भी आप ये इसको यूज करोगे काउंटेबल के लिए, इट विल गिव यू अ सेंस ऑफ काउंटेबल नाउन. जब भी आप इसको अनकाउंटेबल यूज करोगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो ये सेंस देगा अ लिटल, थोड़ी, बहुत थोड़ी. ठीक है. सो द अदर डे आल्सो वी यूज दीज सेंटेंसेस. सो इट इज देयर आर सम बटरफ्लाइज इन द गार्डन. सो गार्डन में बहुत थोड़ी कुछ बटरफ्लाइज हैं. सो अ फ्यू सेंस क्या दे रहा है ये? अ फ्यू. So there are some butterflies in the garden. You can also say there is some jam in the bottle. So bottle के अंदर jam है पर थोड़ी jam है. So which sense it is giving? A little, थोड़ी. So countable में a few, अगर आप count करोगे तो few, और अगर आप अनकाउंटेबल में लिखोगे तो थोड़ी, a few, right? So in this way any क्या यूज करता है आपको? is any is often used as a determiner in negative or in interrogative sentences. So किस में यूज करते हैं हम इसको? नेगेटिव और इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में. एंड इज फॉलोड विद, क्या फॉलो करता है एनी को? काउंटेबल नाउन और एन अनकाउंटेबल. सो वही या तो काउंटेबल नाउन फॉलो करेगा या अनकाउंटेबल नाउन फॉलो करेगा. अब क्या एग्जांपल है इसकी? सो इफ आई से आर देयर एनी बुक्स, क्या कुछ बुक्स हैं? ऑन द टॉप ऑफ द शेल्फ. शेल्फ के टॉप पे एनी कुछ बुक्स हैं क्या? सो नेगेटिव सेंस में, राइट, या इंटरोगेटिव सेंस में. सो आई कैन से देयर आर नॉट any file on the table. Now I am going to use any. So when I'm using any, it means single की बात हो रही है. So shall I write are or shall I write is? There is not any file on the table because एक फाइल की बात कर रहे हैं. So कोई भी फाइल टेबल पे नहीं है. Any and some. So any and some can be used as pronouns and are not followed by nouns. आप इनको pronouns की तरह यूज कर सकते हो, फिर nouns फॉलो नहीं करते. आप जैसे बोल रहे हो is there any sugar in the box? So how do you use it as a pronoun? Yes, there is some sugar in the box. कि sugar है but कम है. Or you can say there is not any, बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी सी भी नहीं है, a little भी नहीं है, right?
सो इस तरह से आप इन वर्ड्स को यूज करते हो, सम एंड एनी, राइट? सो दिस इज द यूज ऑफ दिस इज हाउ वी यूज अ डिटर्मिनर. I can also say that sum is also used in interrogative sentences. Kab? When the answer is yes. Answer yes is expected. जब आपको लगता है कि वो आंसर yes करेगा तो आप इसको इंटेरोगेटिव में भी यूज कर सकते हो. और when we offer something to somebody, कुछ चीजें हम ऑफर कर रहे हैं टू somebody, उस टाइम पे आप इसको इंटेरोगेटिव सेंस में यूज कर सकते हो. सो कैन आई हैव सम बॉइल्ड राइस, यू आर यूजिंग इट इन इंटेरोगेटिव सेंस कि आपको लगता है कि आपको आंसर यस में मिलेगा. हैव यू गॉट some books to read, so आपको लगता है आपको आंसर yes में मिलेगा. So these are all the determiners that we are doing.